hello. So we are back with today's daily question और देखते हैं आज का डेली क्वेश्चन क्या है, कैसे क्या करना है। वैसे आज के डेली क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि वैसे तो मीडियम का क्वेश्चन बोला है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको यूं ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें एक प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा सा टच कर लेंगे कि कैसे निकालते हैं। उसका एक बहुत ही सिंपल रिकर्सिव कोड लेके आया हूँ जो आपको याद होना चाहिए। फ्रैंकली 2 लाइन का कोड है, सिर्फ 2 ही लाइन का कोड है, तो याद कर लो। याद कर लो मतलब समझ लो। और उसके बाद आपके टिप्स पे आ जाना चाहिए कि आपको कोई जीसीडी का कोड बोले तो आप तुरंत ही लिख दो, ज्यादा सोचना ना पड़े उसमें। तो ये मसल मेमोरी में कोड डाल लीजिएगा। करेक्ट करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, आज हमारा क्वेश्चन, क्योंकि याद है ना मैं जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात कर रहा था, तो आज का क्वेश्चन ही है कि हमको एक लिंक्ड लिस्ट दी होगी और उसको मैं हमको जीसीडीज इंसर्ट करने हैं। कहाँ इंसर्ट करने हैं बताता हूँ, कहाँ इंसर्ट करने हैं। तो एक लिंक लिस्ट कैसे देता है आपको कोई भी इंसान, उसका हेड दे देगा, हेड पॉइंटर। ठीक है। अब आपको ये जो लिंक्ड लिस्ट का हेड दिया है उसमें एलिमेंट्स है 18, 6, 10, 3। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें हर दो नोड्स के बीच में उन दो नोड्स जीसीडी निकालना है और ऐसा एक नोड इंसर्ट करना है जो उसका जीसीडी के बराबर हो। जैसे 18 और 6। तो जीसीडी होता क्या है, पहले तो आओ थोड़ा सा जीसीडी समझने का प्रयास करते हैं। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो सबसे बड़ी वैल्यू जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो 18 किस किस से डिवाइड होता है? 18 डिवाइड होता है हमारा, 18 gets divided by, well, 1 is a factor of 18, that's for sure. 2 is a factor of 18, that's for sure. 3 is a factor of 18 because 3 6 are 18. 4 is not a factor of 18 क्योंकि 4 के टेबल में 18 कहीं नहीं आता है. 5 is not a factor of 18. 6 is a factor of 18. Correct, correct. 6 के बाद 7 is not a factor. 8 is not a factor. 9 is a factor. Correct. और 9 के बाद क्या? 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 18 is a factor of 18 because 18 ones are 18. Now let's look at the factors of 6. So factors of 6 will be 1, 2, 3 and 6. Clear? So what is the greatest number that is common in both of these factors lists? The highest number that is common in both of these lists. How to figure out highest number? Let's iterate from what? Right hand side. So if I can see, is 18 in both the lists? No. Is 9 in both the lists? No. 6 is in both the lists. So 6 is the greatest common divisor of both 18 and 6, because you can see since 6 is a factor of 18, so we can divide 18 by 6 with no remainder. So hence it is a divisor of 18, and 6 will always be a divisor of 6 itself. So it is the greatest common divisor. It is a common divisor, right? And since we have iterated from the right, it is the greatest divisor. It is the greatest common divisor. Now, similarly, you can also find the greatest common divisor of 6 and 10. So, the greatest common divisor of 6 and 10, what would it be? It will be 2, correct? Because 2 3s are 6, and 2 5s are 10. The factors of 6 are 1, 2, 3, 6. The factors of 10, if I may write them, are nothing but 1, 2, and 10. Okay? Sorry, 1, 2, 5, and 10. So there's nothing common here except 2. So the biggest number common in 6 and 10 list is 2. So the GCD of 6 and 10 is 2. So this is how you figure out the GCD of two numbers. Correct? Correct. Now, but Ayan, is this, how am I supposed to be like figure out the GCD of two numbers? This is a very lengthy procedure, right? If I'm given two numbers, how am I supposed to figure out what is the GCD of these two numbers? Well, let's see. I'm gonna give you a very sweet recursive code to figure out the GCD of two numbers. It is a recursive code, so it goes something like you take two numbers, A and B, in which A will always be the bigger number and B will always be the smaller number. So remember, while using this code, A will always be bigger than B, or might not. It works in both cases. Okay? Okay. So in this, the base cases when B becomes 0, return A.
Otherwise, return the GCD of this B will come to A's position, and at the position of B, I will write A modulo B. Let me give you a dry run of this very code that how this works. So let us assume that the value of A is 10. Okay, okay. And the value of B is 6. Clear, clear. So is the B 0 in the first call? No. So I will return the GCD return. And what is that I have to return? I have to return the GCD of B, that is 6, and A modulo 6. What is A modulo 6? A modulo 6 is 4. Clear? Clear. Then again, is the B equal to 0? No, B is not equal to 0. So I will again call the GCD of what? B and A modulo B. So 6 modulo 4. What is 6 modulo 4? 6 modulo 4 is again 2. Correct? Because when I divide 6 by 4, 2 remainder is there. Now, is the B equal to 0? No, B is not equal to 0. So I will again call the GCD of 2 and A modulo B. So when I divide 4 by 2, what is the answer? 0. Sorry, what is the remainder? 0 is the remainder, not answer. So 0 comes here. Finally, B is equals to 0. As soon as I call the GCD on these two, B is equals to 0, so it will tend me to return A. So it will return A, that is 2 to here. It will return 2 to here. It will return 2 to here. So finally, this function will give me the value what? 2. Clear? Clear. The two values being given out by this function, which is the greatest common divisor of 10 and 6. This is how this recursive code works. Okay? Okay. So I hope now you understand how GCD works. Now let's get back to the linked list question of how linked list will be working. Now we know how to figure out GCD of two numbers. Clear? Clear. Simply I've made a function, and whenever I'll require, I'll put two numbers in that function, so it will give me the GCD. Now I have been given this linked list. What? This one. And by now, I believe you must have got the concept that between these two nodes, 18 and 6, I have to insert a new node which will contain the GCD of 18 and 6. Between 10 and 6, I have to insert a new node which will contain the GCD of 10 and 6. Between 10 and 3, I will insert a new node which will contain the GCD of 10 and 3, which here is 1. Similarly, if I have only one node, so I have no other node to GCD requires two numbers. Okay. Whenever I have to take common in between things, I'll need two things to take common, correct? And if there's only one thing, nothing can be done. So I'll simply return 7 itself. So let's see how we can start the question. For doing this question, I'll need two pointers, except from the head pointer. The two pointers that I will require will be temp and previous pointer. Okay, okay. And how it will go is temp pointer will be pointing to the first node. Just assume that this node is not here right now. Okay, these two are connected. Actually, the iteration will look a little much better if I just use the pointers here only. And the temp is at the head next node. And just give me a empty node for now. And yeah, this works for me. So I have this empty node. So in the starting, I will get the initial configuration. What is the initial configuration? I will get the temp on heads next, and I will get the previous wherever the head is. This is my initial configuration. This is the step one of my question. Just do this much. Step one is completed. Done, done. You're that much intelligent. Now, in the step two, I will make a new node. So here I made a new node, and I will fill it with the GCD of 18 and 6. So yeah, 18 and 6 का GCD 6. तो मैंने 18 और 6 का GCD 6 फिल कर दिया नए नोड में. डन. स्टेप टू डन. देखा स्टेप टू कितना छोटा था. अब आते हैं स्टेप थ्री पे. नया नोड बनाया है, उसको 18 और 6 के बीच में इंसर्ट करना है. तो 18 के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा? 18 के नेक्स्ट में 6 डाल दूंगा जो नया नोड है, और नए नोड के नेक्स्ट में
पुराना वाला 6 डाल दूंगा. हाउ विल आई डू इट? फॉर डूइंग दिस आई विल सिंपली डू दिस. 18 के नेक्स्ट में 6 और 6 के नेक्स्ट में पुराना वाला, मतलब जो हमारा जहां पे भी टेम्प है वो डाल दूंगा. ठीक है, ठीक है. इसके बाद अब टेम्प कहाँ मूव कर जाएगा? यहाँ मूव कर जाएगा. बट प्रीवियस को कहाँ मूव करना है? प्रीवियस को तो यहाँ पे इस वाले 6 पे मूव करवाना है मुझे. कहाँ पे? यहाँ पे. तभी तो सेम प्रोसीजर दो नोड्स के बीच में रिपीट कर पाऊंगा. तो टेम्प यहाँ पे मूव करे उससे पहले मैं क्या करूंगा? प्रीवियस को बोलूंगा, हे प्रीवियस, मूव टू वेर एवर टेम्प वॉज. क्लियर? एंड देन टेम्प यू मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड देन आई विल रिपीट द होल प्रोसीजर. What was the whole procedure? Step 1. Did I get the configuration correct? Correct. Step 2. What I will need? I will need a new node. I made a new node. In the new node, what will I fill? I will fill the GCD of the two nodes where previous and temp are. So what is the GCD of two nodes where previous and temp are? That is 2, because the GCD of 6 and 10 is 2. Correct? Correct. Then I will make प्रीवियस इज नेक्स्ट. प्रीवियस के नेक्स्ट को किसको पॉइंट करवा दूंगा? मैं नोड को पॉइंट करवा दूंगा. देखो, और नोड के नेक्स्ट को किसको पॉइंट करवा दूंगा? टेम्प को पॉइंट करवा दूंगा. क्लियर? क्लियर. इसके बाद अब मुझे फिर से, जैसे ये मेरा काम हो गया, तो प्रीवियस और नेक्स्ट को नई कॉन्फ़िगरेशन पे लाना है. तो प्रीवियस और नेक्स्ट की नई कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? प्रीवियस और नेक्स्ट की नई कॉन्फ़िगरेशन होती है कि प्रीवियस को कहाँ डाल दूं? टेम्प पे डाल दूं. और टेम्प को कहाँ डाल दूं? नेक्स्ट पे डाल दूं. और ये टेम्प नेक्स्ट पे कब तक मूव करता रहेगा? जब तक ये नल नहीं हो जाता. तो क्या टेम्प नल हो गया है? नहीं, नहीं, टेम्प अभी नल तो नहीं हुआ है. तो फिर से स्टेप 1, मेक set the configuration. Configuration already set. Set. Step 2, make new node. तो step 2 क्या है? Make new node. बन गया new node. क्या? ये बन गया new node. Step 3, sorry, step 2 was make new node and fill it with GCD. What is the GCD of 10 and 3? It is 1. Clear? Clear. Then स्टेप 3, प्रीवियस के नेक्स्ट को कहां पॉइंट करवा दो? नोड को पॉइंट करवा दो. नोड के नेक्स्ट को कहां पॉइंट करवा दो? टेम्प पे पॉइंट करवा दो. स्टेप 3 डन. स्टेप 4, प्रीवियस और नेक्स्ट को नई कॉन्फ़िगरेशन में डाल दो. तो प्रीवियस की नई कॉन्फ़िगरेशन कहां होती है? जहां पे पहले टेम्प था. टेम्प की नई कॉन्फ़िगरेशन कहां होती है? टेम्प के नेक्स्ट पे. अब टेम्प का नेक्स्ट कहां हो गया? नल पे. जैसे टेम्प नल पे आया, मुझे इटरेशन क्या कर देना है? बंद कर देना है. और देखो, जैसे इटरेशन बंद किया, क्या जो मेरी रिक्वायर्ड लिंक लिस्ट थी वो मैं दे रहा हूं? 18, 6, 6, 2, 10, 1, 3. Was this the answer? 18, 6, 6, 2, 10, 1, 3. Yes, that was the answer. बढ़िया. तो इन 4 स्टेप्स में मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली कंक्लूड हो जाता है. ठीक है. स्टेप 1, गेट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. स्टेप 2, मेक न्यू नोड एंड पुट जीसीडी इन इट. स्टेप 3, प्रीवियस को किसको पॉइंट करा दो? नोड को पॉइंट करा दो. नोड को किसको पॉइंट करा दो? टेम्प को पॉइंट करवा दो. और स्टेप 4, प्रीवियस को कहां मूव कर दो? जहां पे टेम्प था. और टेम्प को कहां मूव कर दो? टेम्प के नेक्स्ट पे. क्लियर? क्लियर. तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं. बहुत सिंपल सा कोड है. जीसीडी फंक्शन हमने पहले बना लिया था. तो इसको जो आपका गिवन फंक्शन है उसके ऊपर लिख देंगे. और जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप क्या है? ये दो लाइंस. ये क्या है? स्टेप 1. क्या है ये? स्टेप 1. What was this? This was step 1. Clear? Clear. Now, what is step 1 was done. What was step 2? Make new node. So step 2 will be inside a while loop which runs only if temp is not equal to null. Because before doing every step, I have to make sure that the while, like the temp exists. If the temp does not exist, I cannot run the loop, right? So if the temp is not pointing to null, then only I will enter this second step. What was the second step? Make new node. So list nodes equals to new list node. And what is the value that I'm putting in this new list node? GCD of previous's value and temp's value. So this is step 2. Okay, this is step 2. Now step 3 was to point previous is next to node and nodes next to temp. So this was step 3. And finally, moving on to step 4, I'm redoing the configuration that previous will point to temp and temp will point to temp ka next. See, the step 1 will be done only one time, and all the steps will be done how many times?
all of the steps will be done n times जब तक हमारा लिंक लिस्ट का ट्रावर्सल पूरा ना हो जाए. क्लियर? क्लियर. एंड बेसिकली स्टेप 4 इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्टेप 1 जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन ही सही कर रहे हैं. करेक्ट? So I can write that step 4 is basically get the new configuration, get the new configuration, which is actually, what is the new configuration? Previous का temp, previous को temp पे कर दो, temp को temp के next पे कर दो. तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया हो. देखो हमने सेम चीज किया है, जीसीडी फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन बन रहा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर उसके अंदर हमारा ये ही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 के कोड्स लिख दिए हैं. सिंपली मेरे सारे टेस्ट केसेस रन हुए हैं. दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय मी. एक एक्सेप्टेड सोल्यूशन मिला था. सो यप, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया हो कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है. स्टेप्स सारे क्लियर हो गए हों. और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कुछ भी अगर फिर से समझाना हो तो. And yep, that's all for today. I'll see you in tomorrow's video. Till then, bye bye. सबसे पहले